Once upon a time, I was known as a town of temples. The scattered, dead and dumb stones you find around me were part of a large beautiful temple complex. As it was a religious and cultural hub, devotees used to come from far-flung parts of the country for worship. Then, it was considered as a symbol of glorious religious cultural legacy of the country. But in course of time, the twists and turns of the history brought me down into dust, and I was completely buried under layers of mud and thick vegetational growth. And thus, I went into oblivion. For years, I was waiting for the faint sound of the footsteps of my Savior. Those who work, design and fashion stones have no religion of their own. K.K. Muhammad, then the chief of Madhya Pradesh Archaeological Survey of India, belongs to that category of individuals who goes after exploring and excavating the forgotten heritage of the country, which belongs to the dim and distant past. For him, conserving, restoring and presenting such heritage to the general public is one of the missions of his life. जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वो पहले मैं ये मालूम कर लेता हूँ कि वहाँ का सबसे बड़ी चैलेंजिंग टास्क क्या है। तो ग्वालियर आने के बाद भी वही किया। तो वहाँ से लोगों से मालूम किया तो उन्होंने बताया बटेश्वर के बारे में, लेकिन वहाँ कुछ बताया ये वहाँ तो खुद समस्या भी है। समस्या क्या है उन्होंने बताया तो ये पूरा बिहड़ है, वहाँ डकॉइट से वहाँ काम करना बड़ा मुश्किल है और जो भी काम करना है तो पहले उनके परमिशन लेना है, उसके बाद ही काम शुरू कर सकते हैं। तो ये एज ए चैलेंजिंग टास्क हमने टेकअप कर लिया। उसके बाद फिर जो ना वहाँ मंदिर गया, मंदिर देखते ही देयर वाज ए काइंड ऑफ इनर अर्ज, बिल्कुल एकदम दिल से ही एक पुकार था, ये मंदिरों का पुकार था, इसमें कुछ करना है, इसको ठीक ठाक करना है, ये जिंदगी की एक मिशन बना दिया। The story of stone is older than the story of human beings, earlier than the story of religion. Stones don't differentiate between Hindus and Muslims. Mr. Muhammad, since he has started working on temples of Bateshwar, is in the habit of mentally piecing together these scattered fragments around every temple. जो डकॉइट्स ग्रुप्स है उनको भी सबसे बड़ा पहले ये लगा ये कौन आया है मंदिर को ठीक करने के लिए। तो पता चला कि ये कोई मुसलमान है। तो खैर जरा फिर वो सवाल आ जाते हैं एक मुसलमान क्यों मंदिर को ठीक करेंगे, वो भी जिनका नाम मोहम्मद है। लेकिन जब कुछ उनसे बताया गया है कि नहीं ये मंदिर को ठीक ठाक करने के लिए आया है, तो उन्होंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से 4 मंदिर को और गेटवे को ठीक करेंगे। Then the Chambal region, notorious for dacoits, was infested by 3 dreaded groups, namely Nirbhay Gujar, Ram Babu Gadaria and Tokia. Of them, the most powerful in this area was Nirbhay Gujar. He was told that all these temples were constructed by Gujar Pratihar dynasty, and he being Nirbhay Gujar belongs to that royal lineage. God has sent him to this terrain with the mission of supporting the cause of the temples. Their support changed the whole scenario and restoration picked up. The permission from the dacoits breathed a new life into the temple reconstruction activity. This impossible social engineering brought miraculous results in the restoration. जब 8 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो ये मंजर बिल्कुल अजीब था, सारी चीज़ें बिखरे पड़े हुए थे, सिर्फ ये पिलर बेस था, ये गिरा हुआ था, इसका ऊपर का पोर्शन गिरा हुआ था, उसके ऊपर का पोर्शन भी गिरा हुआ था और ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया तो ये बताया कि ये प्रवेश कवाड़ होगा, अगर प्रवेश द्वार है तो कम से कम इसका दोनों का पोर्शन मिलना चाहिए। उसके बाद जब एक्सकेवेशन किया तो पूरी चीज़ें मिल गई, फिर एक दूसरे के ऊपर
मिला के लगाने लगे और ये जुड़ता गया, एक बहुत ही अच्छा एंट्रेंस गेटवे मिल गया। The reconstruction of this temple entrance gate and the dismantling and reconstruction of the four temples was the first step with which Archaeological Survey of India inaugurated its work. But Archaeological Survey of India had to traverse a long thorny path. पहले खंडर पड़ो वैसे ही रमको रमका दरो इतने इतने टूट फूट सी डरी ऐसो जो में उनका जो डिपार्टमेंट ने आज दिन कब्जा करो है जहाँ पे बटेश्वरा में तब थे जाके सुरक्षित भाई। ये मंदिर का भी हालत बहुत ही खराब था, पूरे गिर गए थे मंदिर। अमल का तो उल्टा पड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं था, सब कुछ उजड़ गए थे। फिर हम लोगों ने इसके बाद जो है खोज शुरू किया। अंदर कोई मूर्ति नहीं था, लेकिन ये किसका मंदिर होगा इसके बारे में सोचा तो छोटा सा एक गैप यहाँ नजर आया। मुझे ये लगा ये नंदिस्तान होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, ये नंदिस्तान होगा। अगर ये स्क्वायर होता ये विष्णु मंदिर होता, क्योंकि विष्णु मंदिर के लिए जो स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ है, उसके लिए स्क्वायर चाहिए। वाहनम वृषभो यस्य वासुकी कंडभूषणम वामे शक्तिधरम देवा वाकाराय नमो नमः। ये स्तोत्र, ये मंत्र उच्चारण करते हुए मैं राइट साइड से निकला, तब मुझे वही एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत नंदी नजर आया और उसको फिर वहाँ से लेके हम लोग यहाँ इसमें वो जो रेक्टेंगुलर गैप था वहाँ रख के देखा, बिल्कुल एकदम परफेक्टली बैठ गया। The way rectangular gap on the floor took us to Nandi and Shiva. Many other interesting leads helped in the reconstruction work. In fact, the best quality of an archaeologist is to know the mute and unspoken language of stones and bricks, with which he is constantly in dialogue and discourse. और ये आज यह इसके सामने बैठता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। In the reconstruction of the temples, several broken fragments of the stones had to be pieced together and stitched together like an expert surgeon by using steel and eraldite. This art of piecing and stitching to make a complete temple is unparalleled. When we look at the temple, little do we realize that this temple is stitched together with hundreds of steel rods and glues inside them for its support. When the painstaking conservation work was in full swing, many interesting incidents occurred. A huge tree that had grown over the temple had strangulated it like an octopus. It appeared that the temple, unable to extricate itself, is gasping for the last breath. In order to rescue the temple, it was decided that the number of roots that had cleaved into the ribs and dangerously cracked the entire structure be removed. But as per Indian Agmas and Shastras, before cutting down a tree, permission should be taken, not only from the tree, but also from the birds who roost over it and the insects who live in it. After taking due permission from all, when this tree was cut down, the entire temple fell down like a pack of cards. But with remarkable eye for detail, the Archaeological Survey of India reconstructed them, stone by stone, right from its foundation, with meticulous care and precision. Earlier, as there was scarcity of water at Bateshwar, even for drinking, water had to be brought from outside. But as the work progressed, an old dry, dilapidated pond was located. When it was cleaned and dredged, water gushed out to support the temple work. At this miracle, the leader of the dacoits gang said, "If your mind is pure, Ganga is at your doorstep." This way, not only human beings, but nature also supported the conservation work.
as Archaeological Survey of India respected the environment, especially the trees and the birds. बारे में सोचिए, ये भी मंदिर दिखाई नहीं देता था। ये बिल्कुल एकदम टुकड़ों में थे और उसके ऊपर मिट्टी पड़ा हुआ था, उसके ऊपर पेड़ भी था और फिर एक ब्रोकन स्टेप था। ये ब्रोकन स्टेप देख के हम लोगों ने सोचा कि जो है यहाँ एक मंदिर होगा, यहाँ एक मंदिर होगा। And thus, the position of 6 temples were identified by carefully crafting these broken, scattered fragments and fitting them into each other like a jigsaw puzzle. When the work of 2 temples was completed, Archaeological Survey of India could breathe easily. You may ask what happened to the rest of the 4 temples. Wait a moment, please. Then what happened was something miraculous. One by one, Archaeological Survey of India could reconstruct 6 temples out of thin air. 3, 4, 5, and 6. I don't know whether you believe in rebirth or not, but what has happened before your eyes is nothing short of a rebirth of 6 temples. Just in front and behind these 6 temples, there were 2 more rows on different terraces. Both of these rows, numbering 14 temples, were excavated, restored and crafted by Mr. K.K. Muhammad like an expert goldsmith, making each temple an enchanting musical symphony. In Chinese culture, it is said that the mythological bird phoenix comes back to life from its own ashes after it is dead and reduced to ashes. Similarly, what a thrilling realization it is to know that Bateshwar has come into life from its own ashes, soil, stones and trees after it was turned into ruins. मेरे पीछे है भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर यहाँ के सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर है। जब भूतनाथ मंदिर में आए तो चारों तरफ देखा, फिर इस पोर्शन को जब एक्सकवेशन किया, हमें यहाँ 11 मंदिरों का अवशेष मिला। वो मंदिर के टुकड़े जितने भी थे उसको पूरा पढ़ा, उसके ऊपर रिसर्च किया, फिर उसी फाउंडेशन में जिस तरह वो ओरिजिनल मंदिर था और वही ओरिजिनल पीसेस लगा के फिर हम लोगों ने जोड़ने लगा और ये 11 मंदिर हम लोगों को पूरा मिला यहाँ। 1, 2, 3 ये 3 मंदिरों का काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके भी सारे टुकड़े हम लोगों को मिल गया है और वो टुकड़े अलग करके रखा है। जैसे फंड्स आ जाएंगे वो फंड्स यूज करते हुए ये इन तीनों मंदिरों का भी काम पूरा करेंगे। For restoring the lost glory of Bateshwar temples, Archaeological Survey of India requires financial help from those who are willing to donate. The central government has started National Culture Fund with this exclusive objective. ये विष्णु मंदिर है और विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर भी यही है। जब हम लोगों ने इसकी खस्ता हालत देखा तो ये डिसाइड किया इसको भी जो है बिल्कुल ठीक ठाक करना है, इसको भी कंजर्व करना है। लेकिन एक समस्या था, चारों तरफ जो है मंदिर के पार्ट्स बिखरे हुए थे, तो जब तक इस मंदिर पार्ट्स को जब बिखरे हुए मंदिर पार्ट्स को ठीक ठाक नहीं करेंगे, इसके आसपास के जो टुकड़े हैं जिससे जोड़ना है वो निकल नहीं पाएंगे। फिर हम लोगों ने पहले ये डिसाइड किया, पहले इस हिस्से को ठीक करेंगे और ये देखेंगे यहाँ कितना मंदिर है। तो हमें ताज्जुब हुआ, यहाँ 13 मंदिरों का अवशेष मिला
वो अवशेष जोड़ के फिर 13 मंदिर इसको चारों तरफ बना दिया। तो जब हम लोगों ने इस मंदिर का काम शुरू किया और 40 मंदिर जब पूरे हो गए, इसके चारों तरफ अखबार में आने लगे, टेलीविज़न में आने लगे, तो इसलिए एक माहौल बन गया यहाँ। पूरा दुनिया इसको देखने के लिए आने लगे। तब यशोधरा सिंधिया जी मुझसे एक बार पूछा, तुमने इतने सारे मंदिर का पूरा काम कर रहे, अभी तक मुझसे नहीं बताया। तो फिर मैंने एक दिन उनको यहाँ लेके आए, वो पूरा यहाँ जगह देखा, इतना इम्प्रेस हुआ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से आप क्या लेना चाहते हो। तो मैंने कहा टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से आने के जो रोड अगर आप ठीक करवा देंगे, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि उस ज़माने में यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। Sri Jyotiraditya Scindia also visited the site. He was visibly moved by the unparalleled work and the grit of the Archaeological Survey of India to fight against many odds and obstacles. A lover of the precious heritage of the country, he promised financial help for the conservation task. While the conservation activity of the temples were at its best, we received the sad news that the Friends of Temples, Nirbhay Gujjar, and his followers are being shot and killed one by the police. While we appreciate the action of the police in eliminating the dacoits, it was a loss for the heritage. As the fear of the dacoits waned down, the mining lobby that did not come to the site as they were afraid of the dacoits started rampant mining in and around Bateshwar. As a result of the vibration of the mining, the restored temples again started developing huge cracks. It was feared that if it continues, the conserved temples would again be reduced to bits and pieces. As letters to the DM, SP, etc. fell on deaf ears, Mr. Muhammad had to resort to such an act, which is against the conduct rules of an official and punishable under the Act. तो मैंने उस ज़माने में राष्ट्रीय स्वयं सेवक की सबसे बड़ा मुखिया थे उस ज़माने में श्री सुदर्शन जी। मैंने एक बहुत ही अच्छा लेटर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेटर उनको लिखा, जिस लेटर में हमने ये कहा कि जो यहाँ जो मंदिर समूह आपके जो पार्टी है, वो मंदिरों का रखवाली करना वो अपने का कर्तव्य समझते हैं। उस मंदिरों में यहाँ बटेश्वर करके एक जगह है जहाँ 200 मंदिर है, उसमें से हमने 60 मंदिर को बिल्कुल एकदम ठीक ठाक किया है और यहाँ का हुकूमत आपके बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में है। उसी पीरियड में जो मंदिर है ये पूरा, अभी देखिए मेरे पीछे से आपको आवाज़ फिर सुनाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम विस्फोट करने का माइनिंग की आवाज़ है। तो मैंने उनको लिखा कि जो ना ये जो चल रहे वो बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में चल रहे हैं, अगर आप इसमें कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, या अगर आदमी किसी को डिप्यूट करना है डिप्यूट कीजिए। Sudarshan ji took action within 24 hours. The then Minister of Culture, Government of India, Srimati Ambika Soni, wrote a letter to Sri Shivraj Singh Chauhan, Chief Minister, Madhya Pradesh, urging him to take immediate action to get mining stopped. The combined efforts of both these leaders yielded results, and the SP and DM rushed to the site, along with a number of police personnel. But the mining lobby was so powerful
that they even fired at the DM and SP. The heavy exchange of fire continued, and at last, police was successful in overpowering the mining mafia. And then the conservation work of the temples progressed without any problem. उनके काम रुक गया है, खदानें बंद हो गई है, तो उनकी पूरी गुस्सा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर था, मेरे ऊपर था, और मेरे साथ जो काम करने वाले मिस्टर सक्सेना थे, मिस्टर राठौर थे, और यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे उनके ऊपर थे। तो धमकियाँ आने लगे टेलीफोन के ऊपर, जो है वो मार डालेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। इन लोगों को, बाकी मिस्टर सक्सेना है, हमारे यहाँ के लोग थे, उनको फिजिकली असॉल्ट करने के लिए कोशिश किए, एक दो के ऊपर जो है ना फिजिकली असॉल्ट भी हुआ है। लेकिन किसी भी तरीके से जो प्रेस हमारे साथ थे, जितने भी चैनल्स थे हमारे साथ थे, और जो और अखबार वाले सारे हिंदी अखबार और इंग्लिश अखबार, ये सारे लोग हमारे साथ थे। इसीलिए हम लोग लकीली हम लोग बच गए। But the brave and courageous IPS officer, Narendra Kumar, was not that lucky. He lost his life fighting for the protection of the environment, heritage and temples. पिछले मार्च में कि यहाँ का एक एसपी थे जिन्होंने माइनिंग को बहुत ज़्यादा रोकने के लिए कोशिश किया। माइनिंग माफिया क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही सतर्क थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनके कई पॉलिटिकल लिंक्स भी थे। वो पॉलिटिकल लिंक्स और अपना ताकत इस्तेमाल करके उन्होंने ट्रैक्टर से कुचल के उनको बहुत बुरी तरीके से मारा। ये तो सिर्फ ऑफिशियल्स को नहीं, नॉन ऑफिशियल्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज था। जो भी हमको अपने रास्ते से रोकेंगे उनको हम इतनी बुरी तरीके से कुचल के मारेंगे, ये मैसेज देने में वो कामयाब हो गए। जब नेशनल मीडिया में, नेशनल अखबार में, नेशनल चैनल में ये बात आने लगे हैं, यहाँ का माइनिंग के बारे में आने लगे हैं, उस ज़माने में हमारा सेंट्रल मिनिस्टर थे श्रीमती अंबिका सोनी। वो बहुत ही सीरियसली इश्यू को टेकअप किया। उन्होंने फिर शिवराज सिंह चौहान जी जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर थे उनको डायरेक्टली लेटर लिखा। वो रिप्लाई में उन्होंने ये कहा कि पहले माइनिंग चल रहे थे, उस माइनिंग को रोकने के लिए अभी हम लोगों ने पुलिस को रखे, डीएम भी गए थे, वहाँ एसपी भी गए थे, उन लोगों ने पूरी तरीके से इसको रुकवा दिया है। और लेकिन वो वहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके जो आखिरी पोर्शन था उसमें वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उसमें ये था कि ये जो ऑफिसर है जो इसके ख़िलाफ़ जो जिन्होंने श्री सुदर्शन जी को लेटर लिखा है, उनके ख़िलाफ़ जो कुछ एक्शन लेना है वो आप तय करेंगे करके एक दो सेंटेंस मेरे बारे में भी जोड़ दिया था। वो मैंने सोचा कि क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर से एक लेटर सेंट्रल कल्चरल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर को जा रहे हैं, तो उसमें वो ज़रूर एक्शन ले लेंगे, और मुझे अपना सस्पेंशन बिल्कुल तय था। All this while, K.K. Mohammed has been waiting for his suspension letter from the Director General, Mrs. Anshu Vash. On the other hand, a hot debate was going on in the ASI headquarters and the corridors of Shastri Bhavan, Ministry of Culture, under which section Mr. Mohammed has to be charge-sheeted. Finally, it was decided that approaching an outside agency by a central government servant is against the conduct rules. But in this case, as he has approached an outside agency not for any personal favor, but for stopping the temples from destructions, no adverse action is contemplated. Mrs. Ambika Soni later on openly praised the courage of Mr. Mohammed and saved him from the firing line of departmental action. He could now devote his full time for the conservation of the temples, as the conservation of all the 200 temples is his giant dream. जब ये बाकी जो मंदिर है, जो 80 मंदिर और जब बन जाएंगे, ये एक इतना इंडिया का सबसे बढ़िया टेम्पल समूह बन जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है, ये खजुराहो को मंदिर से 300 साल पुरानी मंदिर है, और जैसे खजुराहो का मंदिर देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, पूरे हर कोने कोने से लोग जाते हैं,
उसी तरीके से ये देखने के लिए भी पूरी दुनिया के हर कोने कोने से लोग आएंगे, तब जो ना मेरा आत्मसंतुष्टि भी होगी, और वही मेरा तमन्ना है और वही मेरा प्रार्थना है। Perhaps the sound of mining even now frightens him. In Bateshwar, the fight is between the sound of the blasts and the chiming of the temple bells. This fight is for the protection of the environment, forest, and the temple heritage. We request your full help and cooperation for this endeavor. We only want you to visit the place and listen to the music of the ruins and reconstructed temples. Bateshwar waits for you. If you ever feel like financially helping this or any other project in Archaeological Survey of India, please do approach the Archaeological Survey of India on National Cultural Fund, Jaipur House, New Delhi